We are reading Shri Shri Chaitanya Charitamrita, composed by Krishnadas Kaviraj Goswami. Yesterday we heard Sri Madhavendra Puripad. He initiated two Brahmanas and he engaged them in the service of Gopalji. And 2 years went like this. Sri Madhavendra Puripad, he saw how his Gopalji was being served by these two initiated Brahmanas, and that really made him happy. I hope my voice is clear. So for 2 years, Madhavendra Puripad served Gopalji. Now there's a secret here. Okay, thank you, Chandrika Mataji, for confirming. So Madhavendra Puripad served Gopalji for 2 years. So who served? Who actually served Gopalji? Madhavendra Puripad are those Brahmanas. So we heard that Madhavendra Puripad initiated the Brahmanas. We heard this yesterday. And those Brahmanas served Gopalji. But here it is being said that for 2 years, Madhavendra Puripad served for 2 years. It is not said that those Brahmanas served Madhavendra Puripad. So the secret is Guru is the one who actually serves. And he gives Shakti, energy to his disciples to perform service. Like the other day I told you, Gurudev Srila Bhaktivedanta Nayan Goswami Maharaj used to say, there was a festival in America. So Gurudev didn't go for that katha. And all other sannyasis went for that katha in USA. And all other sannyasis were present there. So, in the evening, Gurudev asked everybody, who spoke katha? They said, that Maharaj said, that Maharaj said, that Maharaj said. They gave different names. They gave different names of Maharaj. But Gurudev asked again, who spoke Harikatha? Again, the devotees took some names of sannyasis. But again, third time, Gurudev asked, who actually spoke Katha? So he couldn't understand, the disciple couldn't understand. Gurudev said, I spoke Harikatha. You are thinking he spoke, she spoke, he spoke, that sannyasi spoke, but actually in reality I spoke. Regarding parikrama as well, Gurudev said, who performs parikrama? You all don't perform parikrama. I make it happen. You all follow me. Similarly, in all Govardhan, Vrindavan, Navdeep, Jagannath Puri, Pujari does his service. Brahmachari does his service. But what it is said? Gurudev actually serves. Gurudev actually serves. And disciples just assist the Gurudev, assist Gurudev. We are assistant of our Gurudev. This we should always remember. Never bring this thought in your mind that I am serving. Gurudev is always serving. I am just assisting my Gurudev. Like Gurudev is performing Aarti. Gurudev wants to do Aarti. At the time of the Aarti, we offer a diya. We pour water in conch shell. Who does this? That person is called assistant. Assistant arranges everything. But Aarti is being performed by Gurudev, not by the sevak, not by the assistant. Similarly, in that reference, with that
thought process. We all always assist and Gurudev performs service. The one who thinks I am serving, he is the biggest fool. Who gives us the qualification to service? That's Gurudev. If somebody might think that I never knew how to do this service, I have no qualification, then they become nervous. So don't become nervous. Gurudev gives us qualification. He makes us qualified. Let me tell you one pastime of my Gurudev. Srila Bhakti Pramod Puri Gosai Maharaj, 1923, when he got initiated. So one day, Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he called him, I want you to serve in my publications. Guru Maharaj said, I don't even know the P of publication. I never did any kind of job in publications. Prabhupada gave him a pen to Gurudev. You keep this pen and you will get everything. All the experience, expertise, skills you'll get. Gurudev said, I kept that pen as my property. If something is given with love, then that should be kept very full of, very near to our heart. So Gurudev said that pen never stopped. Whole life I used that pen. I wrote articles using that pen. And that's how I performed my services in publications. Similarly, it happened with us as well. Year 2000, when I came to Gurudev, so Gurudev said, help me in publication. Now here Gurudev is Nai Gosai Maharaj. Do translation, type in computer, edit, format, layouts, and print. I said, Gurudev, I have never done this work before. I have no experience, no skills, no expertise. So Gurudev said, you will get experience automatically just by doing. Don't be nervous, don't be fearful. It will happen automatically. I said, Gurudev, I never even used computers in college. I didn't know how to use computer at that time. Gurudev said, now you'll get to know. Now you will get all the training. So Gurudev gave laptop by his own hands, from his own hands. And gradually, so it was Gurudev's desire, and I learned everything, how to type. And that to Hindi typing, not English typing. English is easy, alphabets, letters. But English keyboard, typing Hindi. Typing Hindi on English keyboard, that's challenge. If I think that I did this service by my own hard work and I served Gurudev by my own hard work, then I'll be a fool. It's not just about saying in words. I'm not showing off. I'm not pretending. I'm telling the truth. It's a wealth of my life. Actually, Gurudev gave me that strength. Only just by his saying this task, this service happened. Otherwise, I had no qualification, no strength. This is anubhuti, experience, realization. Those who do, only they can realize. Those who don't do, they can't realize. So if Gurudev is giving you any service, serve it by your tan, man, pran, means body, mind, and words. There'll be ups and downs, there'll be mistakes. Sometimes Gurudev will appreciate, sometimes Gurudev will chastise you. And if these two are not, both of these are not there, then how asakti will come? Shri Gurure Charane Rati.
So with love, that service should be. We should embrace the service which Gurudev gave us. That Seva came to me. Seva walked on to me. Always avail the opportunity. Never give up the opportunity of service. Seva has come to your door and knocking the door of your heart. Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj used to say, Seva came to your door. Krishna sent that service to your door, knocked your door. How can you reject the service? Then you are unfortunate if you're rejecting the service. Otherwise, we would have gone out and look out for service. But when Gurudev himself giving service, means Krishna's service came to me directly. And if we reject service, then we don't know when next we're gonna get services. Srimad Vindapuripad is trying to trying to explain here that he's giving us this teaching that Gurudev is the one who actually performs the services, not the disciple. Disciple is just an assistant, just a sevak. Then one day, Sri Madhavendra Puripad saw one dream. Again, another dream. Yesterday, we heard that he saw a dream. First dream was Gopalji said, "Hey Madhav, I had been waiting for you." Now this dream has come. Gopalji is saying, "Hey Puri, my body's heat is not going away. I feel lots of heat, too much heat in my body. So what you should do? Go to Nilachal, and from there you should get Chandan, sandalwood. Nilachal is Jagannath Puri. You need Malay Chandan for me. Nobody else can do this task, so you should go immediately, without any delay." Krishna couldn't find anybody else. Whom he said? Shri Madhavendra Puripad. Was he very young, Madhavendra Puripad? No. He was old. He was in his old age. So why Krishna chose an old person for Gopal's service? Not any young person. Why? There were so many devotees. Krishna could have said to anybody. Krishna snatches the bhoga of devotees, but for non-devotees, Krishna will not even look at them. If a non-devotee offers bhoga to Krishna, Krishna won't even look at that bhoga. But if a devotee offers, then Krishna snatches it to honor it. So having so many devotees, yet Krishna had been waiting for Madhavendra Puripad, that when he will come and he would serve me, I would take service only from him. And then, what is Malya Chandan? So Chandan, there is a hill. It's near this. This is a very old story. At the time of Madhavendra Puripad, so there is a hill near Nilachal, Jagannath Puri. So Malay Parvat, Malay Hill. So we sing that bhajan. So the breeze coming from Malay Hill. Malay is near Nilachal, Jagannath Puri. Malay also means Malaysia. There's a sea between Malaysia and India. So this Chandan comes from there. And what is Australia?
Australia, Malaysia, and India. बतलाते थे ऑस्ट्रेलिया मतलब क्या? Australia means what? उससे पहले भारत बहुत बड़ा होता था। Earlier, Bharat was ये तो huge. समय के अनुसार Now, as per समुद्र ने अलग time, ocean, देश बना लिए, territories बना because लिए। of ocean, different countries have manifested. तो ये ऑस्ट्रेलिया क्या? What is Australia? ऑस्ट्रेलिया मतलब अस्त्रालय। Astrale. Australia is अस्त्रालय से Astrale. बन गया ऑस्ट्रेलिया। From Astrale came अस्त्र Australia. मतलब weapon। Astra means weapon. अस्त्र शस्त्र बोलते हैं ना। Astra Shastra, और weapons. आल्य मतलब And Ale means जैसे बोलते हैं विद्यालय। like how we say Vidyale, विद्या का आल्य। where you get हिमालय, Vidya. बर्फ का आल्य। Himalaya, where you get अभी तो बर्फ गिर रही है सब जगह। snow. Himalaya, where you get यूरोप snow. में, Now अमेरिका में at this सब time, जगह बर्फ। everywhere it's हिमालय, snowing. नीम का आल्य, Himalaya, बर्फ का घर। it means house of snow. ऐसे ही Similarly, अस्त्रालय, Astrale, पर अर्जुन, where Arjun, भीम Bhim, अपने अस्त्रों को रखते थे। they used to keep their अस्त्र weapons. शस्त्र छिपा कर Astra रखते Shastra, थे। they would hide over there. पांडव अपने अस्त्र रखते थे, इसलिए Pandavas उसका would स्थान hide बना their हुआ गया astras, अस्त्रालय, weapons over there. ऑस्ट्रेलिया। So this is how Australia और got its name, मलेशिया, Astrale. जहाँ से And मलय Malaysia, पर्वत, where there जहाँ was से a मलय चंदन Malay आता है। Parvat, Malay hill, और वो क्योंकि and that was जगन्नाथपुरी से famous for समुद्र साइड sandalwood. होता है, तो And वो it's थोड़ा near सा Jagannath sensitive Puri, so it makes some sense that it's the same hill. स्वप्न देखी पुरी गोसाई हैला प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाली वारे गेला पूर्व देश। ये स्वप्न देखकर Having this dream, माधवेंद्र पुरी प्रेम Sri आवेश Madhavendra Puripat got in और गोपाल जी trance, की आज्ञा पालन करने and के लिए he to fulfill the desire of his Gopalji, नीलाचल की ओर चलने के लिए he तैयार था। started moving towards स्वप्न में गोपाल जी ने Nilachal. आदेश दे दिया, In the dream, पहले Gopalji चंदन gave कहाँ orders, से लाओ? bring मलय Chandan पर्वत for से, me. From मतलब where? नीलाचल, Malay जगन्नाथपुरी से। Parvat means Jagannath Puri, और ये Nilachal. स्वप्न इनको कहाँ दिखा? गोवर्धन में। And he saw कितना this डिस्टेंस dream हुआ? at Govardhan. What's the गोवर्धन distance? और जगन्नाथपुरी का Govardhan to डिस्टेंस Jagannath Puri. What's the distance? ऑलमोस्ट Almost 2000 किलोमीटर। 2000 kilometers. जबकि वहां पर उस समय फ्लाइट भी नहीं हुई, And that time there were no ट्रेन भी नहीं flights, है, no trains, बस भी नहीं है। no buses, no cars, कैसे no जाना है? scooters. How to go? 2 नंबर बस। 2-number bus. Bus number 2. 2 नंबर बस समझते हैं? What is that bus? ये ऐसे ऐसे Walking, पैदल जाना है। on foot, barefoot. कुछ नहीं है, बैलगाड़ी नहीं, कुछ नहीं। No पैदल। balgadi, no bullock cart. तो और किसी को नहीं बोला, इनको बोला। So nobody else was गोपाल said. जी स्वप्न देखकर Nobody else was called for गोपाल this जी ने service. जो आदेश Only दिया, Krishna chose Madhavendra माधवेंद्र Puripad. पुरी जी बड़े प्रेम में आविष्ट हो गए। So Madhavendra इसका Puripad मतलब got क्या? in गुरु जी trance. अगर सेवा देते हैं, So Gurudev is giving us some अपने आप को service. सौभाग्यशाली We should मानना feel है। fortunate. ये नहीं, हे भगवान, Not like ये this. आफत Oh मुझ पर Bhagwan, why this service came to मेरे me? को फंसा दिया। I'm stuck in this आएगा, service मैं क्या now. करूंगा? Now what I will ये do? सेवा मेरे This घबरा गया service, बेचारा। and we get nervous. बड़े प्रेम से उस सेवा को गले लगाना With चाहिए। love, we should embrace गुरु that जी को गले service. लगाना चाहिए, उस सेवा Like को गले लगाना चाहिए। we should आपने embrace मुझको those सेवा दी। services which Gurudev gives us, which Krishna gives us. जगन्नाथपुरी की ओर Jagannath, माधवेंद्र so पुरी Madhavendra चलने लगे। Puripad moved towards उन्होंने श्री गोपाल जी Jagannath Puri. So he सुचारू रूप से सेवा के लिए served लोगों को नियुक्त he किया engaged और फिर disciples to गोपाल से serve आज्ञा Gopalji, लेकर and he took permission from गौड़ देश के लिए Gopalji चल दिए। to move to Gauradesh. अब माधवेंद्र पुरी जी Now गोपाल जी की Madhavendra सेवा को छोड़कर Puripad जा रहे हैं। left the service of पीछे Gopalji. सेवकों को लगा दिया। तुम लोग देखना, He engaged गोपाल जी other की सेवा people करो। in his तो service. सेवकों को गोपाल जी की सेवा में लगाया, तो स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद क्या सेवा छोड़कर जा रहे So हैं? does it mean that Madhavendra Puripad is not doing any service? Is he निकल जा रहे leaving हैं, all his ये भी services? सेवा करने जा रहे हैं। No, he's also going for another service. इसलिए हमारे गुरुदेव So our Gurudev, प्रभुपाद जी Prabhupada ji, जब ये when they वृंदावन धाम छोड़कर जा रहे हैं, leave Vrindavan तो Dham, वास्तव में धाम छोड़कर नहीं जा they are रहे not really leaving हैं, Dham. वृंदावन धाम की सेवा करने They जा are रहे हैं। serving Vrindavan Dham. They are going to serve ठाकुर जी Vrindavan को Dham. छोड़कर जाने का मतलब छोड़ना नहीं है, Leaving Thakurji doesn't mean उनकी actually सेवा leaving करना। Thakurji. It means serving Thakurji. पीछे सेवकों को रख दिया So और स्वयं सेवा the करने के लिए pujaris are left behind to serve the deities of Gopalji, शांतिपुर and आइला Madhavendra Puripad अद्वैताचार्य moves परे, towards Nilachal for दूरी another प्रेम service of देखी Gopalji. आचार्य आनंद अंतरी, तार ढाई मंत्र लैला यत्न करिया, चलीला दक्षिणपुरी तारे भिक्षा दिया। क्या कह रहे हैं? श्री माधवेंद्र पुरी जब Shri शांतिपुर Madhavendra पहुंचे, Puripad, when he reached Shantipur, तब वे श्री अद्वैताचार्य जी के घर में रहे then he stayed at the house of Advaitacharya. और श्री माधवेंद्र पुरी के
कृष्ण प्रेम को देखकर And अद्वैताचार्य seeing जी the के हृदय में बहुत Krishna Prem आनंद of हुआ। Madhavendra Puripad, he became very happy. उन्होंने माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना He करके prayed to दीक्षा मंत्र Madhavendra ग्रहण Puripad किया and took Diksha और mantra दीक्षा from him. प्रदान करके Madhavendra Puripad gave माधवेंद्रपुरी Diksha to Advaitacharya, दक्षिण दिशा में and then he नीलाचल moved को towards क्या Nilachal. हुआ? Okay, what happened here? माधवेंद्रपुरी जी Madhavendra Puripad चलते 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 शांतिपुर reached Shantipur. He और was कहाँ पे walking रहते शांतिपुर and में? he reached to Shantipur and he श्री stayed अद्वैताचार्य at the house of Advaitacharya. उन्होंने माधवेंद्र जी पुरी जी के Advaitacharya सुंदर भावों को देखा। saw the beautiful bhav, emotions for Krishna in his heart, in the heart of Madhavendra अद्वैताचार्य जी के Puripad. हृदय में आनंद Advaitacharya got so happy, he और felt इस so समय उन्होंने anand, and, दीक्षा की and he प्रार्थना की। asked for, prayed for Diksha, initiation. बहुत से भक्तों के Many जीवन में ऐसा devotees, होता है। they go through this कहते situation. हैं It is said, पहले नजर में ही प्रेम हो जाता है। love at first बोलो sight. Love at first sight. जब When मैंने अपने गुरु महाराज जी को I पहली saw बार my देखा था, Gurudev for the first time, अभी तो दीक्षा का कोई मूड नहीं था। there was no mood of Diksha बस for देखा me. था। Just I saw him. कौन सी ईयर में? Which year was that? 94, 1994, 1994. 94 या 95। 94 or 95. कोई हमको गुरु महाराज जी का दर्शन कराने चले Someone took me to Gurudev, Bhakti वही Pramod Puri महाराज Goswami थे, Maharaj. बोलते हैं चलो आपको बहुत बड़े गुरु जी का दर्शन Oh, कराएं। let me take you to a very big ले गए saint, Vaishnav, Guruji. और हम अंदर गए कमरे में, And I went to his room. गुरु महाराज जी को प्रणाम I किया offered prayer, और obeisances to उनको Guru देखने Maharaj. से ही And just by seeing him, अपने आप automatically हृदय में, मन में in my mind, thought came, यही गुरु महाराज he is my इससे Gurudev. दीक्षा ली। I'll take initiation only from him. Just by किसी seeing को him. कहने से नहीं, Not because जबरदस्ती someone नहीं, told me, not because someone forced me. क्योंकि ये हृदय की बात है। It's all about heart. अपने आप हृदय किया। The heart answered. तो अपने आप हृदय करता है मतलब अपने आप करने का मतलब पहले से प्लानिंग नहीं। It was not planned. कुछ तो प्लानिंग होता है ना। Sometime we हम plan. जाएंगे, अच्छा देखेंगे, We will कैसा go, होगा, we'll see how it कैसे हैं, happens. देखने में कैसे हैं और क्या बोलेंगे। What ये होता है Gurudev will planning। say. This is planning. When we are और thinking एक होता है what will unplanned। happen, what he will say, what I will say. प्लान नहीं And, किया, and another thing is लेकिन देखा unplanned. और देखने से ही Just seeing, मन में ऐसी and we get the thought that he is my अद्वैताचार्य Guru. जी He is my Gurudev. के हृदय में अपने गुरुदेव माधवेंद्र पुरीपाल जी को देखकर ऐसी भावना आई। So Advaitacharya got this bhavna in his heart for his Gurudev, दीक्षा मंत्र करने and की he प्रार्थना prayed for getting Diksha mantra from Madhavendra Puripad. Okay. So हमारे गुरुजी जब दिल्ली में आते थे, our Gurudev, when he used to come to तो Delhi, ऐसे बहुत सारे Bhaktivedanta Nayan Goswami Maharaj. So जो पहले many से हरिनाम करते थे, disciples who used to chant Hari Krishna कथा सुनते Mahamantra, थे, they used to hear Hari Katha. लेकिन जैसे गुरुजी का But when they सुंदर मधुर saw beautiful उनका व्यवहार देखा, behavior, उनका रेस्पिरेशन देखा, reciprocation of Gurudev, अपने आप उनका हृदय their heart melted गुरुजी के पास आ गया। towards Gurudev. अपने Automatically, it was spontaneous. कितने भक्तों के So many devotees मन में ऐसी भावना, got this emotion in their heart, उनकी एक bhavna, कथा सुनने feelings, से just by hearing बड़ा one प्रेम katha of होता है। Naya Maharaj, just by hearing one katha. लेकिन इसका मतलब क्या? But what does it mean? हम और सबको त्याग देंगे? Are we leaving others? No, we are not leaving others. हृदय की बात है। It's all about दिल heart. किसी पे भी आता है, हृदय किसी पे भी आ जाता है। We ना can, ऐसे बोलते हैं ना साधारण भाषा में, in ordinary language, we say, we can love इसलिए कभी anybody. दीक्षा गुरु और कभी शिक्षा So गुरु, sometimes Diksha Guru, sometimes Siksha Guru. किसी पर भी हृदय आता है We can love, और उनको हम अपना सब feel कुछ मानते surrendered to any one of them or to both of them, and we तो consider them our हैं। everything. रमुनाते करीला गोपीनाथ दर्शन तार एक देखिया हईले निवल मन। चलते चलते मार्ग में एक While स्थान walking, है, there's a उसको place बोलते हैं which रेमुना। comes. It's called Remuna. रेमुना में उन्होंने At गोपीनाथ जी Remuna, के दर्शन he किए। took darshan of Shri Gopinath उनके ji, मनोहर रूप को देखकर and seeing his beautiful पूरी गोसाई का मन Shringar, विवल हो गया। Madhavendra Puripad became jubilant. अब यहाँ पर बात आ गई, Now जगन्नाथपुरी के at रास्ते में ही एक स्थान आता है रेमुना।
So on the way to Jagannath Puri, this place comes. It's called Remuna. बड़े सुंदर गोपीनाथ There is जी, this बहुत beautiful सुंदर। Gopinath Ji's temple उनको over देखने there at से ही Remuna. And just by seeing those deities, माधवेंद्रपुरी पाजी का हृदय उतर आया। Madhavendra फिर Puripat, क्या किया उन्होंने? you know, he नित्य गीत करिया जगमोहन वसीला, just seeing the beautiful क्या क्या भोग deities, लागे, वैरागी ब्राह्मण पूजिला। he became full of फिर joy, माधवेंद्रपुरी blissful में happiness, कभी Anand, नित्य गीत करके and he performed Nitya बरामदे में ही Geet. बैठ गए। He performed Kirtan and he उन्होंने sat over there. गोपीनाथ जी को देखा, He saw कुछ Gopinath गान Ji, गाया, कुछ नृत्य he किया और performed वहीं बैठ some गए। bhajan, Kirtan, फिर and he sat there. गोपीनाथ जी की सेवा And के सौंदर्य को देखकर and इतने seeing the सुंदर रूप से shringar गोपीनाथ जी of की सेवा चल रही Gopinath है, Ji, ये how देखकर beautiful his service was माधवेंद्रपुरी happening. पाजी का हृदय So एकदम Madhavendra आनंदित हो गया। Puripad's heart became full सीधे of नाचने लगा, bliss. इतनी सुंदर भगवान की सेवा हो रही है। Such nice services और happening उनके of मन में Gopinath Ji. और उन्होंने मन में अनुमान लगाया And he felt in कि his निश्चित रूप mind से that definitely गोपीनाथ जी को Gopinath Ji उत्तम उत्तम भोग लगाए is जाएंगे, getting great, great अच्छे delicious अच्छे भोग bhoga, लगते होंगे। very इसलिए tasty. गोपीनाथ जी भी प्रसन्न थे। That's why even Gopinath और Ji is उनकी happy. प्रसन्नता को देखकर And नित्य seeing विभोर his happiness, Madhavendra Puripad is being इसलिए so उन्होंने एक happy. वैरागी ब्राह्मण से पूछा, So he asked a गोपीनाथ Brahmin, जी को क्या क्या भोग लगता है? what all do you offer to Gopinath Ji here? मन में एक जिज्ञासा हुई, He was inquisitive, Madhavendra Puripad. गोपीनाथ जी को क्या क्या भोग लगता है? What all Gopinath Ji is being offered जेवन here? इहा भोग लागे सकल शुभ, तेमन अनुमाने भोग गोपाले लगाई बा। कह रहे हैं, यहाँ जिस प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, Here, the bhogas which are उन being सब के offered, विषय में सुनकर उसी here. के अनुसार अनुमान से अपने गोपाल को भोग लगाऊंगा। Okay, so Madhavendra Puripad is माधवेंद्र जी thinking, ने whatever bhogas प्रश्न which are पूछ लिया offered here to Gopinath Ji, पुजारी जी से I will try to कि understand गोपीनाथ जी and को I would offer हम the क्या क्या same भोग bhoga लगाएं? to ये my प्रश्न किया। Gopal at Govardhan. So why did he have this question, पहले तो ये Madhavendra देखकर Puripad? कि गोपीनाथ जी बड़े प्रसन्न थे, First, he saw Gopinath Ji is so happy. इसने अनुमान लगाया कि So इनको he बड़ा अच्छा अच्छा भोग assumed लगता होगा। that he is definitely getting all tasty bhogas here. फिर ये Then अनुमान लगाया he कि assumed पता that लग जाए क्या क्या भोग लगता let है, me अपने find गोपाल out को भी भोग which लगाऊं, all bhog items he's getting over जिससे here. मेरे Then I गोपाल will जी offer the same to my प्रसन्न हो Gopalji जाए। at Govardhan. Then he will इसलिए also यहाँ पर become क्या very happy, कृष्ण इंद्र प्रीति satisfied. वाचा धरे प्रेम नाम, अपने गोपाल जी की इस बात को अंडरलाइन करना, Underline this अपने statement. गोपाल जी को भी ऐसा भोग लगाऊंगा I will offer the ऐसे same उनको मैं bhoga to लगाऊंगा। my Gopalji. This was भावना his मन अपने feeling. गोपाल जी के कारण। It was for his Gopalji, not for himself. इस उद्देश्य से माधवेंद्रपुरी With पाजी ने this purpose, ब्राह्मण से प्रश्न किया he questioned that और Brahmin, तब ब्राह्मण ने जो and जो then भोग Brahmin रखा था उसका सारा explained विवरण बतला दी, सब in कुछ बता detail दिया। what all bhogas were being offered there to Gopinath Ji. संध्याए भोग लागे खीर अमृत के नाम, द्वादश मृत मर्त पात्रे भरी अमृत समान, गोपीनाथेर खीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी ते ऐसे भोग कहा नहीं है। ब्राह्मण ने भोग की एक विशेषता So बताई। Brahmins, ब्राह्मण ने ना लिस्ट बताई, हम गोपीनाथ जी को ये Brahman भोग gave a लगाते हैं, list. ये भोग We लगाते हैं, offer ये भोग this, we लगाते हैं, offer this, we offer लेकिन this. But एक विशेष बात there is a special thing. क्या कहा? What is that? संध्या में In the evening, श्री गोपीनाथ जी को Shri 12 Gopinath Ji मिट्टी के is offered कुल्हड़ में, मिट्टी का kheer जो in पॉट होता है, earthen का जो pots. कटोरा होता है, It's called kullad 12 in Hindi. फल, 12. 12 उसमें such अमृत के लिए नाम की earthen खीर भोग pots लगाई। were being offered खीर का to नाम भी क्या Gopinath है? Ji with ऐसा Amrit लगता है किसी Keli माता का नाम Kheer. है, अमृत के लिए। Amrit Keli Kheer. किसी It पुराने sounds like one Mataji's name. नाम होता था ना, There used to be a name, अमृत अमरावती, Amravati, अमृत केली। Amrit Keli. खीर का नाम बता रहे हैं, So अमृत Kheer's केली name नामक is खीर का Amrit भोग लगाया। Keli Kheer. वो क्यों ऐसा नाम है अमृत Why केली? this क्योंकि name वो is given? अमृत के समान Because it स्वादिष्ट tastes like just nectar. और सच में ये बात है। And it's true. हम लोग तो बहुत बार खाए, We have honored it आप many लोगों times. ने भी बहुत खाया होगा। People जो have नहीं must have खाए वो also कैसे honored जानेंगे? it. वो एक Those who बार अगर haven't honored, चख के how would देखेंगे they ना know? तो How would they बिल्कुल know? अमृत Once if you taste it, then you will understand. ये It's स्वाद just like नहीं है, nectar, so साधारण tasty, नहीं, not एकदम ordinary, गाढ़ी गाढ़ी है, so रबड़ी thick, like तरह rubbery. एकदम गाढ़ी सी खीर। एक थोड़ा सा खाने से ऐसा लगता है अमृत खाना हो रहा Just by having a है। नाम small ही अमृत के लिए है। sip of it, one can understand it's just like nectar.
ये गोपीनाथ की खीर के नाम से So सारे जगत में प्रसिद्ध है। it's known ऐसा in the भोग world किसी में by और कहीं Gopinath नहीं लगाया Kheer. जाता। Gopinath's Kheer. In the entire world, it was known famously like that. It's so tasty. So on the entire planet Earth, nowhere else such tasty kheer is offered. Then what happened? अयाचित खीर प्रसाद अल्प यदि पाई, स्वाद जानी कैसे खीर गोपाल लगाई। उसी समय At that time, Madhavendra Pripad heard that Gopinath Ji is offered Amrit Keli Kheer Bhoga here daily in the evening. Then he thought in his mind, if I just get a bit of it, then I can taste it and understand how it's being made, cooked, what all ingredients are there. So is this like lobe? Is this like greed? I've heard this kheer is so tasty. So Madhavendra Puripad is thinking, let me also taste it. Let me also taste it. Why? Why? Is it for himself? To satisfy his tongue and belly? No. I will offer the same kind of kheer to my Gopalji. That's why this thought came to his mind. It was not for him at all. It was to give pleasure to his Gopalji. To satisfy his Gopalji. This is called love. Where your personal love, care doesn't matter, your happiness doesn't matter. What matters is others' happiness. Then that love becomes more condensed, like Amrit Keli Kheer. If you are sacrificing your happiness for others, then it becomes like Amrit Keli Kheer. I don't care about my happiness, but I care for my lover's happiness, my Priyatam, my Isht, my deities, my Bhagwan. So Madhavendra Puripad ji, for his Gopalji, for his Gopalji, he wanted to taste kheer. At the same time, he said, I will not eat it automatically. I will not honor it by myself. If someone comes to me and offers me, only then. That's his nature. I will not beg for it. I will not ask for it. If someone sends it to me, he could have asked to the Brahman, Pujari ji, can you give me some? I want to prepare it for my Gopalji. He could have easily asked anybody over there. But it was his vow in his entire life. It was his principle, a rule. He would never ask for prasad from others. If someone gives it to me, then I will honor it. And that too, he took a vow for having milk in his entire life. In his entire life, he had only milk, no grains. And that milk also, if someone sends it to him, gives it to him. So apart from milk, he never had anything, and now he wants to have kheer. Why he is having this desire in his heart? Because kheer not for him, for his Isht Gopal. So there is a breaking of rule over here. But for whom? For whom? For his Isht. This is the point over here. Like at the banks of Radhakund, at Govardhan, where we have Radhakund, there Shri Raghunath Das Goswami performs bhajan. Very beautiful bhajan. He performs beautiful bhajan there day and night. During the day, what he has? One small bowl of buttermilk. Chach. In English, it's called buttermilk. Just one small bowl, not more than that. In entire Braj, he is famous that he only takes one small bowl of buttermilk. But one day he's holding his stomach and saying, "My stomach is paining. My stomach is paining." So Brajvasis, they brought one doctor to him, Ayurvedic doctor.
He checked his अब जो pulse. बोलते हैं इन बाबा जी ने तो इन बाबा ने तो बहुत गरिष्ठ को भोजन कर लिया। Oh, this Baba has taken something really heavy. He has eaten something really heavy. सबके मन में संशय हो So गया। everybody doubted him. ये बाबा तो कभी कुछ खाते But नहीं, this Baba never eats anything. छाछ पीते हैं बस। He only takes some buttermilk. तो इनका पेट ऐसा कैसे So हो how his pate is upset, stomach is upset now. गया? डॉक्टर भी नहीं समझ। Even doctor couldn't understand. तो बाद में कभी पता लगा Then later on, it was found out राधा रानी ने Radharani कृष्ण के लिए खीर बनाई थी। prepared kheer for Krishna. कृष्ण ने खीर को खाया Krishna had और थोड़ा सा kheer जूठा छोड़ दिया and he राधा जी left के his लिए। remnants for Radhaji. राधा जी के पास Radhaji gave remnants to और her सखियों के Sakhis, बाद फिर and Sakhis gave remnants रघुनाथ to दास गोस्वामी जी ने Raghunath Das यहाँ Goswami. नहीं, उस लीला में खाया, Not here in that Leela. गोलोक में Golok, Chit Leela, खाया वहां पर पेट Chitlok यात्रा पे। Leela. He had there, but his stomach is सब खीर absent का here. It's all about kheer. खाया वहां पर खीर को, He had an kheer at Golok लेकिन Dham, पेट यहाँ पर but his stomach is upset here in this world. फिर ऐसे पता लगा। This is the secret. इसलिए यहाँ पर माधवेंद्र जी भी So here Madhavendra Puripad, माधवेंद्र जी भी उन्होंने विचार किया मैं मांगूंगा नहीं, कोई अपने आप he से नहीं decided करता। I will not eat. If I will not ask for फिर the क्या kheer, हुआ? someone has to come and give it to me. गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्ते स्पर्शे पुनः प्रेमन खाइला। यद्यपि श्री गोपाल ने सब अन्न व्यंजन खा लिए, So Gopal honored all तथापि the उनके हाथ food के स्पर्श preparations. से पुनः सब कुछ पूरक हो। Still, by the touch of Gopal, everything manifested again. Nothing was reduced like in food. Is it for Gopal or गोपाल जी Gopinath? की इस Gopal भोजन ji. लीला का अनुभव केवल श्री माधवेंद्र And पुरी this जी को pastime ही only हुआ था। Shri Madhavendra Puripad could realize, could see, not others. So Maharaj is checking something basically. इसलिए इस शब्द को स्मरण रखना। You should remember this word. याची वृत्ति मतलब Yachi Vritti. बिना मांगे कुछ मिलेगा वही खाओ। Without begging, if I get something, only that I would honor. Nothing else, nothing more than that. What happened? That is not working at Maharaj's place. अच्छा, एक इच्छा लज्जा पाइया विष्णु स्मरण करिला, इन काले भोग सरी आरती बाजी। माधवेंद्र जी ने इच्छा की मैं खीर खाऊं, ऐसी इच्छा करते अपने जीवन का लोभ समझकर He desired to have kheer, but he felt that it's my greed. स्मरण करने लगे And he और started अपने thinking मन of में Vishnu. खीर की ओर, अपना मन खीर की ओर ना जाए ऐसा विचार। And he tried not to take his mind to that kheer, rice pudding. माधवेंद्र जी को अब लज्जा आ रही, Madhavendra Puripad is भाई now मैंने feeling खीर खाने की इच्छा क्यों की? bad that why did I desire to have kheer? I have never ate anything in my life. I never desired to eat anything in my life. I never even begged for getting some milk in my life. Why this desire came to me? Why? Why? बोलते मन में He लज्जा आ रही he felt he's और भगवान का feeling स्मरण bad, करते हुए अब shy. उनका मन खीर की ओर ना जाए ऐसा। So he's trying to distract his mind उसी from समय kheer. भोग समाप्त हो गया, And in that moment, आरती हुई और आरती का दर्शन Bhoga करके was over, श्री माधवेंद्र Aarti जी was performed, गोपीनाथ जी को
प्रणाम And किए Madhavendra Puripat खीर offered के his विषय में obeisances कुछ to बिना कुछ कहे Gopinath मंदिर ji, से बाहर and चले without saying anything, he just left the मन temple. में ये भावना आ रही है मैंने खीर के संबंध में क्यों In his विचार mind, किया this thought is मेरे coming. को Why ऐसा did नहीं करना चाहिए why did I ask for आज the मैंने kheer? क्यों खीर खाने की Why इच्छा did I even desire to गलत क्या have हुआ kheer? Kheer means rice pudding. और ऐसे करके उन्होंने आरती का दर्शन किया So he took aarti, गोपीनाथ जी को प्रणाम किया offered और pranam to मंदिर से Gopinath भागा ji, and left उसके बाद temple. Later on, अयाची वृत्ति पूरी विरक्त उदास अयाची पहले खान करे नहीं उपवास श्री माधवेंद्र पुरी Sri Madhavendra किसी Puri, से कुछ नहीं मांगते थे he would never ask यदि for अपने anything from आप anybody. कोई कुछ खाने If के लिए दे देता somebody था would give तो him, उसी को खाते थे he would only honor नहीं तो that. उपवास ही करते Otherwise, he would fast the entire day. वे प्रेम अमृत के पान में ही तृप्त रहते थे He उन्हें would कभी always भूख remain प्यास की सताती absorbed नहीं in उनका highest मन सब taste. समय He would भगवान के never worry स्मरण में about रहता था hunger. उनको भूख प्यास कैसे लग सकती Hunger and thirst जैसे that would never सुखदेव गोस्वामी disturb जी him. कितने दिन भागवत Like कथा सुने Shukdev Goswami spoke Bhagavad for how सात many days? 7 days. परीक्षित जी ने Parishit Maharaj, 7 दिन तक कथा सुनी for 7 days he heard Hari Katha. बीच में कितनी बार भंडारा हुआ How many times there was Bhandara feast during हुई that time? Feast. कोई भंडारा नहीं Was there any feast for during पानी those तक नहीं 7 है days? Not even water was offered. जो इनको भूख प्यास नहीं लग रही Don't they feel hungry and thirsty? क्यों नहीं लग रही No. Why? Why? क्यों भूख प्यास नहीं लग रही क्योंकि जो प्रेम पी रहे हैं Because the love they are प्रेम drinking, का the अमृत पी nectar रहे of love, हैं उनको साधारण खाने पीने में किसी प्रकार की that कोई इच्छा would make them lose interest in ordinary food and water. आज माधवेंद्र जी की भी स्थिति Today, today Madhavendra Puripad's माधवेंद्र situation is पुरीपाद same. उन्हें कभी भी भोग First. सकने की इच्छा हुई So when he tried to तो उसे taste वे अपराध मानने लगे kheer, हाय he रे मैंने felt it's my अपराध किया offense. It's because मेरे of my अंदर ये इच्छा offenses. क्यों आई This desire came to my mind because of my offenses. मैंने आज तक तो It's कभी my इच्छा नहीं fault to मैं me खीर now. क्यों खाऊं Why should अगर मैंने I अपराध have किया kheer? मैंने अपराध I have committed some ऐसा offenses. विचार करके Definitely, he's feeling मंदिर से guilty. बाहर आकर He left the एक temple. गांव के निर्जन स्थान He, he एकांत sat में बैठकर in a village, and the Pujari गोपीनाथ जी ji, को सुना he made Gopal शयन ji, आरती sorry, गाई Gopinath ji to rest. Shayan Arti. दोबारा नहीं गाऊं कुंवर कन्हैया सो जा वंशी बजैया सो जा आंचल सो उड़ाओ शयन की गाओ कुंवर कन्हैया सो जा माखन चुरैया सो जा आंचल सो उड़ाओ शयन की सुनाओ ठीक है उस दिन पूरी सुनाई दी ना I sang the entire song the other day. गोपीनाथ जी को So Gopinath ji शयन दे दिया is resting now. He's made to rest. अच्छा निज निज कृत्य करी पुजारी करिला शयन सपन काले ठाकुर आसी बलिला वचन पुजारी अपनी सेवा को समाप्त करके Pujari अपने घर finished गए all his और सो गए services and he went back to his और house and he आधी रात slept में off. And late in the पुजारी night, को Pujari गोपीनाथ जी स्वप्न में आकर कहने लगे Pujari got a कि dream, तुम and in अपने his dream स्वप्न की बात came सुन रहे हैं Gopinath ji. गोपाल जी माधवेंद्र पुरी जी को So स्वप्न दे रहे हैं so यहाँ पर Gopal ji is giving dream to Madhavendra गोपीनाथ जी Puripat, and पुजारी here को अपने सेवक को Gopinath ji स्वप्न is giving dream, coming in the dream of his क्या बोल रहे हैं Pujari, his sevak. उठो पुजारी Wake up, कर द्वार Pujari. विमोचन खीर एक Gopinath is saying राखी this. अच्छी सन्यासी कारण हे पुजारी उठो Oh Pujari, wake मंदिर up. का द्वार द्वार खोलो Open the door of the मैंने temple. सन्यासी के लिए I have खीर kept का एक कुल्हड़ kheer रखा है for one sannyasi. मतलब एक कसोरा रखा है Kullar, kasora, or उसे you can मैंने say अपने earthen pot. वस्त्र की ओट में छिपा रखा I have hidden it in my behind my गोपीनाथ जी dhoti. भगवान तो चोर है ना Krishna is a thief. इतने बड़े भगवान He's such a क्या big बोला जाता है Bhagwan. शुक्र And how is it how is he ब्रजे referred? प्रसिद्धाम नवनीत Braje चोरम Prasiddham Navnita Choram. बड़े फेमस है He's a प्रसिद्ध मतलब famous. बड़े फेमस है He's very क्या famous. करते हैं माखन को चोरी He करते steals butter. हैं
और हमारे लिए क्या करते हैं? And what he does for us, अनेक जन्मचित पाप चोरम, he steals the sins, हमारे जन्म जन्म के पापों को चोरी करते हैं। our अच्छे चोर है sins ना? from last many births. So what a great अच्छे चोर है chore, कि नहीं? what a great thief he is. जो भगवान का नाम लेता है, Those who उनके chant the समस्त names पापों of को चोरी कर Bhagwan, लेते हैं, हरण कर Krishna लेते steals all their sins. हैं। कितने अच्छे चोर हैं, हमारे लिए तो कितना अच्छा चोर है ये। So he's a very हमारे तो good बहुत thief पाप for है, us. We have so मन many में भी sins पाप आ inside जाता us, है, in our mind, वचन में भी पाप आते in हैं, our शरीर speech, से भी पाप in करते our हैं। mind, by our भगवान mind, body आप also सारे we पापों को commit चोरी sins. करते हैं, बहुत अच्छा है। Krishna, you take our हरे sins. कृष्णा हरे कृष्णा, Hare मेरे Krishna, सारे Hare पापों को Krishna. आप हरण कर Please दो, take चोरी away कर my दो। sins. Please तो माखन steal की my चोरी all करते हैं। sins. गोपियां So स्नान he कर रही steals थी, उनके butter. सारे वस्त्र चुरा लिए। Gopis were वो बोलते हैं, ऐसी कैसी बाहर आ taking जाओ। bath in Yamuna, कृष्ण कह रहे and हैं, Krishna stole all their ऐसी clothes. कैसी बिना वस्त्र के बाहर आ जाओ। How तो Krishna वस्त्र told चोर भी them, है, come out without चीर clothes. चुरैया, So he's माखन thief of चुरैया, clothes as well. गिरिवर Thief उठैया, of ऐसे नाम है ना। चीर चुराते हैं, मतलब वस्त्र भी चुराते हैं। cheer chura, और यहाँ के इस उदाहरण cheer में क्या churakar. देखा? खीर भी चुराते हैं। He सुना तो steals यही था कि kheer. माखन चोरी करते I हैं, only heard that he would steal लेकिन ये makhan, चोरी इतनी butter, आगे बढ़ती जा रही है, but इतनी आगे now बढ़ती जा रही he है, is इतनी आगे बढ़ती advanced. जा रही है कि अब खीर भी चुरा रहे हैं। Now he's also stealing kheer, ये rice तो बहुत pudding. सी बड़ी बात है, माखन और खीर चुराना। Kheer, राधा जी makhan के is normal, but now इतने he's प्रेम को taking चुरा ले, kheer as well. तो कितने शातिर, He's so कितने चालाक he's so chalak, clever, होंगे। clever thief. राधा जी के हृदय में जो प्रेम है, The heart, जिसको the कभी love in किसी the को heart of दिखाती नहीं, Radhaji, which she never बस shows to अंदर anyone, बंद रखती but है। she keeps it in इस her प्रेम को heart. Even राधा that जी love, Radhaji कृष्ण को बतलाती है। tells it to सुनाया था ना Krishna. परसों, I said this अंदर जो day बात before है प्रेम yesterday. की, किसके सामने खोली? कृष्ण के सामने खोली। अब भगवान उस प्रेम को चोरी Now Bhavan is stealing that love. श्री राधा हृदयम चोरम, राधा जी के हृदय में और उनके प्रेम को चोरी करते हैं। The love in Radhaji's heart is also being stolen by Krishna. प्रसिद्ध चोर He's a very famous आज तो thief in उन्होंने खीर Braja. चुराई, Today he stole खीर kheer. चुरा कर देखो, पूरा प्रसंग समझ आ रहा है कैसे? Are you understanding the entire पुजारी जी verse? ने So रात को भोग लगाया, Pujaraji offered bhoga in the night. आरती की, He performed arti और भोग लगाकर फिर क्या करता पुजारी? and then he सारा made प्रसाद लेकर Krishna. बाहर आ जाता He है। took out all the prasad. पुजारी जी बाहर आ गए Pujari ji came और out. 12 पूरे गिनती के 12 कसोरों में खीर So, लगती है, भोग लगता है। so kheer is always पुजारी offered अगर in कोई 12 kullad. So he desired to offer kheer to his Gopal at Govardhan, but then he felt guilty that how could I get this desire that I should taste the kheer first, and then as per this standard of the kheer, I would offer it to my Gopal at Govardhan. So in the night, Gopalji came. Sorry, Gopinath came in the dream of a pujari, of that same pujari. Oh, wake up! One bowl of kheer I've hidden behind my legs. मेरी माया के कारण तुम्हें उसका पता नहीं चला। Because of my Maya, you didn't realize. Go, बाहर गांव में एक go, भागवतपुरी नाम का and एक सन्यासी बैठा है, there is a वो खीर ले sannyasi जाकर उसे ही called खिलाओ। Madhvendra Piripad. You give him that kheer. भगवान ने आज खीर छोड़ी। Today, Krishna stole कुछ लोग बोलते हैं, kheer. अरे Then ये some तो people say, पत्थर की मूर्ति है, he's just some patthar, ये लकड़ी की stone मूर्ति है, vigrah, ये तो पेंटिंग wood की मूर्ति है, vigrah, ये तो लोहे की सोने की मूर्ति iron, है। gold मूर्ति थोड़ा ना बोलो, vigrah, मूर्ति तो मूर्ति है। idol, actually, idol. ऐसा होता है, Is it like that? विग्रह, Vigrah, मूर्ति नहीं, उनको शिव विग्रह कहा जाता Shri Vigrah. There's difference. है। ये तो साक्षात उदाहरण है। This is like इस लीला के real द्वारा example. बताया, श्री गोपीनाथ जी खीर चोरी कर रहे हैं और अपने कपड़े के नीचे Gopinath छुपा ji is रहे हैं। stealing kheer and he's also hiding it behind यहाँ जो his legs. घर में मूर्ति होती है, So the विग्रह होते हैं,
Vigraha we have in our house, are they active or inactive? प्राण प्रतिष्ठा से पहले इनएक्टिव, Before Pran Pratishtha, they are लेकिन inactive. जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो But गई, where Pran installation हो Pratishtha गई, is done, तो active installation is done, then they are जैसे active. ही एक्टिव होते हैं ना, And the moment they are कुछ तो active, करते हैं। they do something or the other. जब ये जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं, When they become activated, तो कुछ तो होगा, something will happen. Something will happen. कुछ नहीं। फोन का सिम लेते हैं ना, Some people buy a SIM, mobile SIM, फोन का सिम लेते हैं, वो एक्टिव नहीं होता, that's not active. उसको रिचार्ज करो तो एक्टिवेट हो If you जाता है। recharge it, then it will become active. भगवान को इंस्टॉलेशन करने से जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, It's the आपके दिल को चोरी करते हैं। Oh, so after getting installed, Pran ठाकुर जी active Pratishtha, हो the first thing Krishna does कुछ is भी कर he सकते हैं, steals your heart. He can do सबसे anything. पहले अपने सेवक के मन को चोरी First, he करते will हैं। steal the कौन सा सेवक, mind of जो his सच में devotees. प्यार से, The, प्रेम the से sevak who has उनको devotion, सेवा करना चाहता है, the sevak who is sincere, तो एक्टिव इस only तरह से those एक्टिव हो जाते हैं sevaks. भगवान। This is how he gets active. तो पुजारी जी, So Pujari, अब वो खीर लेकर, now he took the kheer. हाँ, गोपीनाथ जी ने कहा, Gopinath ji said, go to the market. पूरी नाम की There's a sannyasi called Madhavendra खीर Puripat. को दिया। This kheer is for him. You should give it to पुजारी him. क्या कर रहे हैं? Now Pujari ji, कि पुजारी he गोपीनाथ saw जी the का dream विचार, and now he's स्नान कर, thinking. कपाट खुली, He took shower लगवा। and he opened the door of the temple. सुबह देकर पुजारी ने उठकर, गोपीनाथ जी ने जैसा आदेश किया, As per Gopinath's order, he जब उसने स्नान started करके thinking, मंदिर का द्वार and then he took shower. He opened the door of the temple. खोल रहे हैं ना, इसे तो जाकर ठाकुर जी को नहीं उठा सकता, नहीं स्पर्श कर सकता, He can't touch क्योंकि पहले Thakur खोलना ji पड़ेगा, पहले directly स्नान after स्नान करके sleeping. मंदिर का First, he द्वार has to take a shower. Then पुजारी he को opened the गोपीनाथ जी door, के वस्त्र के नीचे एक खीर का and then he found that इतने kheer चलाक है bowl. भगवान। Behind पूरी कमल आगे गोपीनाथ खीर खरी न छूटी। कौन है जिसका नाम माधवपुरी है, कौन है भाई Who is Madhavpuri? Who is कृपा करके Madhavpuri? इस खीर को ग्रहण करें। Please honor this आपके kheer. लिए गोपीनाथ जी ने For ये खीर you, चुनी। Gopinath ji stole this kheer. पुजारी हाथ में लेकर Pujari took the kheer in सब his जगह hand घूमता है। and he's going कौन है everywhere. माधवपुरी, Who is कौन है Madhavendra Puri? Who माधवपुरी? is Madhavendra देखो Puri? आज Who is गोपीनाथ जी Madhavendra ने Puri? Honor this kheer, आपके समान भाग्यवान enjoy it. लोक में और कोई नहीं There's no one more fortunate than you in जिसके all लिए the three भगवान ने planetary खीर चुनी। systems. You are the one for whom Krishna stole kheer. You're so fortunate. निज कृत करी पुजारी करी न शयन। ये तो सुनी पूरी गोसाई परिचय बिना, खीर दिया पुजारी तारे धन्वत होना। पुजारी जी की आवाज सुनकर Seeing the श्री माधवेंद्र words, hearing the words of Pujari का ji, परिचय दिया, Madhavendra Puri कहने लगे he हाँ introduced मैं ही himself to him. माधवेंद्र Yes, I am Madhavendra Puri. What are you saying? पुजारी जी ने खीर का पात्र Pujari ji offered kheer to Madhavendra Puripat, offered Dandvat to him, and Pujari ji said, उन्हें खीर की चोरी का पूरा वृतांत he सुना। explained him the पुजारी जी ने entire बता दिया, आज pastime. गोपीनाथ जी ने Today आपके Gopinath लिए ji stole kheer especially for you, इसे सुनकर only for you. माधवेंद्र पुरी And Madhavendra Puripat again got into trance. Like he got absorbed in prem. I'm so fortunate. भगवान मेरे लिए खीर Krishna stole for me, kheer for प्रेम me. की सेवा करें, महिला उसमें कृष्ण से विहार वश उनके कृष्ण प्रेम को देखकर
Seeing his Krishna's love, seeing his Krishna's prem, Pujari ji thought in his mind, ये अच्छा ही है, it's good गोपीनाथ जी that के Gopinath is controlled by him. बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं, It's not क्योंकि जिनके लिए something strange. गोपीनाथ जी खीर चोरी कर Because if Gopinath ji can steal kheer for him, then he must be someone really special, not someone. He can't be ordinary person. आवेश करीला पुरी से खीर भक्षण, बात प्रक्षालन करी खंड खंड कैला, भैरवा से बंदी सही भिखारी रखिला, प्रतिदिन खाने करे भक्षण, खाइले प्रेम वेश है अद्भुत कथन। ये कहकर Saying this, पुजारी जी ने उनको Pujari ji प्रणाम किया offered और पुजारी obeisances अपने to घर आ गया। him and he came back to his house. श्री माधवेंद्रपुरी ने Shri Madhavendra प्रेम में Puripat, आविष्ट हो गए। in सोचिए, love, माधवेंद्रपुरी जी की उस समय क्या स्थिति होगी। what must have been अरे, his मैंने situation? खीर खाने की इच्छा की, I desired to मैंने have तो अपने kheer. आप को धिक्कार दिया, है क्यों इच्छा Then की? I was feeling तो guilty. फिर Why did I भगवान ने desire? मेरे लिए खीर क्यों Then ली? Krishna sent it for me गोपीनाथ जी especially. ने Gopinath इतनी ji दया की, showed मेरे so लिए much खीर क्यों mercy छोड़ी? for me, stole kheer for me. खीर खाने के बाद After honoring अब kheer माधव जी prasad, ने पहली बार उस खीर को खाया। the first time he had आज that तक kheer, जीवन में दूध पिया in his था, entire life he had कुछ नहीं only खाया milk. था। He never had any grains, no समझ fruits, में? nothing. आज तक जीवन में कुछ नहीं खाया था, सिर्फ दूध पिया था। Only आज पहली milk. बार खीर खाई। Now first time he's खीर खाने honoring के kheer बाद prasad. उन्होंने खीर प्रसाद के कुल्हड़ को धोकर He washed that छोटे-छोटे earthen टुकड़े pot and broke it into small clay pieces. pot, Clay pots, मिट्टी का बर्तन, mitti ka छोटा सा, bartan, अच्छा सा। small clay pot. उन्होंने खीर तो खाई, लेकिन उस बर्तन को भी तोड़ दिया। And he broke that छोटे-छोटे टुकड़े utensil बनाकर अपने कपड़े में and broke it into small pieces and tied it कपड़ा होता है, in a cloth. उस पर ऐसे उन्होंने बांध दिया। Which cloth? Which cloth? जगन्नाथपुरी जाते हुए And then on the way to Jagannath Puri, माधवेंद्र जी Madhavendra Puri रोज Path, daily he would एक ठीकरे ta- को खाते और take उसे one खाने के साथ small साथ प्रेम में piece डूब जाते। of that खीर तो clay खा ली, pot and he would get absorbed खीर in तो Krishna ज्यादा दिन Prem. नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी। Kheer would not last for तो long. क्या किया, It will तो go मिट्टी का जो because it's milk. कटोरा था, कुल्हड़ But that clay pot, उसको रोज थोड़ा he would थोड़ा daily have खाते रहे। it daily. यहाँ पर क्या Small, small, सिद्धांत बता small रहे हैं श्री bites गोपीनाथ of जी it. महाराज जी? The siddhant over here is हम अगर खीर खाएं if we have और kheer मिट्टी का बर्तन खा सकते in हैं, a clay pot, can we eat clay pot? हम उसको उठाकर फेंक देते We हैं। will throw it in the bin. कोई डोना में प्रसाद देता है तो If someone खाकर gives डोना फेंक us देते हैं। prasad in a लेकिन माधवेंद्र जी bowl क्या of विचार कर रहे हैं? भगवान leaves, ने पूरा खीर का we throw it away. कटोरा मेरे लिए चोरी किया। So Krishna stole the जैसे entire खीर प्रसाद है, pot for me, not ऐसे just मिट्टी का kheer, बर्तन clay भी pot प्रसाद as well. है। So even that is a मेरे prasad लिए for तो me. दोनों ही प्रसाद For me, both are prasad. है। इसने खीर भी खाई So kheer also he और मिट्टी honored, का बर्तन भी and खाया। that clay pot also he honored. उसके टुकड़े कर लिए, He made it रोज into उसे small थोड़ा pieces थोड़ा and daily he खाते would, हुए honor गोपीनाथ it जी का small, स्मरण small करते हैं। in small quantities. And he's thinking of Gopinath ji इसलिए whenever he's honoring those इनके pieces लिए of clay दोनों ही pots. प्रसाद है। For him, both are prasad, खीर both को are प्रसाद remnants और of मिट्टी का Krishna. प्रसाद। Kheer prasad and clay pot prasad. ठीक है, आज की कथा को यहीं पर रखते हैं। Let's end it over here today. समय हो गया, Time और is 3 up. घंटा बीत गया है ना? Very fast time flies, 1 hour. मेरे को अपनी चिंता नहीं, I don't feel worry मेरा भी for me. कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है। I have a program right आप now, लोगों की चिंता है, आपने but यहाँ पर I रात को feel 10:30 all बजे of you, it's 10:30 in India. यूरोप वाले ठीक है, Europe people are in good time हॉलैंड, zone. स्विट्जरलैंड, ये सब Switzerland, जितने लैंड है ना, different lands, ये सब ठीक है, they all are good. लेकिन इंडिया में But देर हो गई। India is late now. It's 10:30 p.m. हम अपनी कथा को यहीं पर विराम So देते हैं। we will end here. और आज कथा हो गई जैसे-जैसे, Today somehow Katha took place. No अब कल problem फिर happened. ये पक्का नहीं, For tomorrow, I'm not sure. गारंटी नहीं। There is no guarantee. इसलिए कल So tomorrow, मैसेज आएगा, message will come in the कथा हो group. जाएगी, So Katha will take place. मैसेज नहीं If आएगा there's no message in the group, तो सोचो आप कुछ so that means we have an off tomorrow. अपना मैसेज देख लेना, So you keep it eye on 15 your मिनट group पहले मैसेज दे दो, WhatsApp message. We'll send a message 15 15 मिनट minutes पहले मैसेज advance. देंगे, आप लोग की कथा। Then you all can join tomorrow. Gaur Premanande, Hari Hari Bol.